Good morning, students. Today I will explain about the trigonometric equations. Like you have studied the trigonometric functions. So what are the trigonometric equations? Already you know about the equations. So today we just going to study about the trigonometric equations. So equations involving trigonometric functions. So this is important thing. Equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations. Okay, means in any equation, if trigonometric functions are appearing with the variable, then this equation becomes a trigonometric function like sine theta, sine x, cos theta, tan x. What will comes in this type of equation is called, this type of equations are called the trigonometric equation. For example, sine x is equal to 1 upon 2 or 2 sine x is equal to 1, tan x minus 1 is equal to 0. So these type of equations are called trigonometric equations. So every equation, since you know that equations are having the solutions or roots. What are the roots of equation? The values of variable which satisfy the equations is called a trigonometric equation. Similarly, students, principal, so there are also solution of trigonometric equation. Means the possible values of variables which satisfy the given trigonometric equation is called the solution for the trigonometric equations. So there are the solutions are, if you see, like sine x is equal to 1 upon 2. If sine x is equal to 1 upon 2, then students, sine x is equal to 1 upon 2. Then what may be x? X may be 30 degree. You can say pi by 6. So are only pi by 6 is possible or any other value? You know that sine x, cos x are always repeating its value after every 2 pi. So therefore, this sine x is equal to 1 upon 2 is also maybe possible value of x is 2 pi plus pi by 6. Right? 4 pi plus pi by 6 and so on. So according to this, in trigonometric equation, there are the two type of solution. So first solution I have written here, principal solution. What is principal solution? Look here, the principal solution. What is the principal solution? The solutions of trigonometric equation for which this variable is x, then x, variable is y, then y, variable is theta, then theta. This variable, the values of variable lies between 0 to 2 pi. This is called the principal branch, 0 to 2 pi. Then this solution are called the principal solution. Then the solutions are called principal solution. Means the value of variable lies between 0 to 2 pi of closed interval. Already you learned in the set closed interval between 0 to 2 pi. Means its value is between 0 to 2 pi. Why? Because after 2 pi, they will, all the trigonometric functions, they are repeating their values after 2 pi. So therefore, if the values of x lies only between 0 to 2 pi, then it is called principal solution. For example, if I will take sine x is equal to 1 upon 2, then x is equal to only pi by 6. So this is one solution. This is the principal solution. If tan x minus 1 is equal to 0, then tan x is equal to 1. So what may be x? X may be pi by 4. x क्या हो सकता है? Pi by 4, जो कि लाई करेगा between 0 to 2 pi. 2 pi means 360 degree. So then it is called the principal solution. So sometime it come find out. So in class 10th, if you solve any question, you got only the principal solution. But here one more term is there, general solution. ये general word है, means all solution, all possible solutions को बताना, that is called the general solution. So the expression or you can say the solution involving integer n, जिसमें n integer का यूज हो, which gives all solution of trigonometric equation. जो उस trigonometric equation को, all solution को, जितने भी possible solutions हैं उनको explain कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, is called the general solution. यहाँ पे n क्या होगा? कोई integer होगा, for any integer. So there are these two type of solution. So according to these solutions, so now we are going to discuss how can you solve the trigonometric function to get its general solution or to get its particular solution, or you can say principal solution. तो principal solution तो हम easily जो table learn किए हैं values उसके according समझ सकते हैं, but to get the its general solution there are the some theorems. So here is the first theorem, students, I am going to explain. If sin x is equal to sin theta हमको मिल जाए,
अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा आ जाए जहां पे ये एक्स और थीटा रियल नंबर्स हो, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा वेयर एक्स इज अ वेरिएबल, so how can we get its solution? So if sin x is equal to sin theta, अगर sin theta को ट्रांसपोज करें it becomes sin x minus sin theta is equal to 0. Then apply the formula of sin c minus sin d. So what is sin c minus sin d? It is twice of cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 is equal to 0. So we got what are the possibilities are there? It is possible that cos x plus theta by 2 0, otherwise sin x minus theta by 2 0. If cos x plus theta by 2 0, then what may be x plus theta by 2? Then this x, think karo when cos theta is 0, when cos theta is 0, when theta is the odd multiples of pi by 2. ये cos x plus theta by 2 0 कब होगा? When x plus theta by 2 is equal to the odd multiples of pi by 2, means x plus theta by 2 किसके इक्वल होना चाहिए? Odd multiples of pi by 2. तो odd multiples 2n plus 1 pi by 2. यहाँ पे n क्या हो? इंटीजर हो. Otherwise sin x minus theta by 2, you know when sin theta 0, sin theta का ग्राफ देखो, sin theta की वैल्यूज थिंक करो. So when sin theta 0, when theta is the multiple of pi, pi के मल्टीपल पे 0 हो जाता है. Therefore x minus theta upon 2 is equal to n pi. अभी देखो फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करें, 2 कैन बी कैंसिल, ये 2, दिस 2 कैन बी कैंसिल. सो व्हाट मे बी x इज इक्वल टू 2n plus 1 pi एंड थीटा को ट्रांसपोज करो माइनस थीटा, तो दिस मे बी द पॉसिबल वैल्यू फॉर फर्स्ट. मतलब x क्या हो सकता है? x हो सकता है 2n plus 1 pi minus theta, एंड इन सेकंड x minus theta upon 2 is equal to n pi. सो 2 ट्रांसपोज करेंगे तो अदरवाइज क्या मिला? x is equal to 2n pi plus theta. जस्ट look here, this 2n plus 1 pi minus theta and second 2n pi plus theta. So from here you will get that one clear thing you can get, ये जो 2n plus 1 into pi means odd multiple of pi के केस में थीटा यहाँ माइनस हो रहा है, and 2n pi means even multiple of pi के केस में थीटा प्लस हो रहा है. if both को हम कंबाइन कर लें एक कंक्लूजन, वी विल गेट अ कंक्लूजन. व्हाट कंक्लूजन कैन वी गेट? मींस अगर sin x इक्वल टू sin थीटा हो तो देखो कंक्लूजन हमको क्या मिल रहा है? ऑड के केस में थीटा माइनस हो जाता है, इवन के केस में थीटा प्लस होगा. अगर बोथ को हम एक साथ में कंबाइन करें तो दिस वी कैन राइट इन दिस वे. क्या नोट कर सकते हैं? n पाई, व्हाट वी कैन राइट? n पाई प्लस x मे बी n पाई प्लस minus 1 to the power n into theta where n belongs to z. तो ये देखो पॉसिबल सोल्यूशन होगा. अभी हम लोग इस सोल्यूशन को थिंक करते हैं, इज इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन और नॉट. मींस इफ n को हम 1 रखते हैं, 1 इज अ ऑड नंबर, सो क्या होना चाहिए? इफ n इज ऑड, सो व्हाट कैन वी गेट स्टूडेंट्स? ये ड्यू टू द मिस्टेक इट इज फॉलन हियर, सो जस्ट फॉरगॉट इट. It is n pi minus theta, right now? N pi plus minus 1 to the power n into theta. Okay, so in this case you can get it. If n हम 1 रखते हैं जो कि odd value है, तो यहाँ क्या मिलेगा? pi और ये देखो minus 1 to the power minus, so what we will get? Pi minus theta. देखो odd के केस में pi minus theta होगा. If n के प्लेस पे 2 पुट कर दे, n is equal to I will put 2, तो यहाँ क्या मिलने वाला? 2 pi, जो कि इवन नंबर है. यहाँ पे minus 1 to the power 2, you will get 1 के केस में n is equal to अगर 1 पुट करते हैं तो क्या मिला? pi minus theta. If n is equal to 2, then 2 pi plus theta. देखो ये बोथ को सेटिस्फाई कर रहा है ना? So therefore this is the solution for that. Means if sin theta is equal to sin x is equal to sin theta, then x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into theta where n belongs to any integer. So this is the general solution. ये इसका क्या होगा? General solution होगा. This is the general solution of this type of equation. Look, one example I will show to you how can you solve this type of equation when you use this. If it is given, solve one example I going to explain here. 2 sin x minus root 3 is equal to 0. So this solve करना है तो देखो ये हुआ sin x is equal to root 3 upon 2. Is it clear?
उसको हम नोट कर सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नोट करेंगे जिसके लिए साइन एक्स √3/2 होता हो, यू नो √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, सो दैट्स वाई पाई साइन पाई बाई 3, तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अभी इसको सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू द रूल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो देखो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, दिस इज द जनरल सोल्यूशन of the equation. So this is the general solution of this given equation. General solution. ये general solution find out हुआ. So this is the question I explained based on the theorem number 1. Now I am going to explain its next theorem number 2. So theorem number 2 for cos theta. If cos x is equal to cos theta, then how can you solve if given? So next theorem number 2, theorem number 2, if cos x is equal to cos theta, if cos x is equal to cos theta, to solve same as, so you can write cos x minus cos theta is equal to 0. Then apply the formula of cos c minus cos d. Cos c minus cos d. What is cos c minus cos d? Twice of sin c plus d by 2 into, if you will take here minus sign, then you can write sin, otherwise, so sin c minus d by 2 is equal to 0. So what are possibilities? Possibilities हो सकता है sin x either sin x plus theta by 2 is equal to 0, otherwise sin x minus theta by 2 is equal to 0. If sin x plus theta by 2 is equal to 0, then x plus theta, like last question, x plus theta by 2 must be the multiple of pi होना चाहिए, otherwise x minus theta by 2 is also the multiple of pi, है ना, क्योंकि sin theta 0 तभी होता है जब theta क्या हो multiple of pi, so according to that this must be equal to n pi. So x plus theta is equal to 2n pi, this implies x is equal to 2n pi minus theta, और देखो यहाँ पे सॉल्व करो x minus theta is equal to 2n pi, so और x is equal to 2n pi plus theta, means x का possible solution, what may be the possible solution for x? The possible solution may be 2n pi minus theta, it may be 2n pi plus theta. अगर बोथ को हम कंबाइन करके कंक्लूजन नोट करें, हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, x 2n pi means इवन मल्टीपल ऑफ पाई में भी थीटा और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे प्लस थीटा भी होगा और माइनस थीटा भी होगा, therefore its solution is becomes x is equal to 2n pi. अभी वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए क्या हुआ x is equal to 2n pi plus minus theta where n belongs to z, और यहाँ पे ये x और थीटा बोथ क्या होना चाहिए रियल नंबर. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर दैट, ये इसके लिए जनरल सोल्यूशन हुआ, इससे प्रिंसिपल सोल्यूशन भी फाइंड आउट हो जाएगा. अगर इसको हम हटा दें तो ये थीटा हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होना चाहिए, थीटा मस्ट बी अ प्रिंसिपल सोल्यूशन होना चाहिए, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट थियरम, थियरम नंबर 2. सो अकॉर्डिंग टू यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन वन एग्जांपल बेस्ड ऑन इन, चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, हाउ कैन यू use the example. So one example based on this property. Suppose करो we want to solve √2 cos x is equal to 1. So how can you solve? पहले cos x नोट करो. What is cos x? Cos x is 1 upon √2. Right now cos x is equal to 1 upon √2. अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करो. ये किस पे होता है? cos pi by 4 की वैल्यू होती है. फाइंड आउट हुआ cos x is equal to
cos pi by 4. Cos x is equal to cos pi by 4. So it is in the form of cos x is equal to cos theta. So according to the formula, answer क्या होना चाहिए? What may be the general solution? X is equal to 2n pi plus minus theta. What is theta? Pi by 4, where n belongs to z. ये n integer में belong करे. You can verify your answer. where अगर हम n के प्लेस पे 0 रखें x इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई 4. cos पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2. अगर हम n के प्लेस पे 1 रखते हैं तो देखो इफ n इक्वल टू 1 पुट करें तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू होगा 2 पाई प्लस r माइनस पाई बाई 4. जस्ट फाइंड आउट इट्स वैल्यू. cos 2 पाई प्लस r माइनस पाई बाई 4. You know cos 2 pi plus theta goes in first quadrant, and in first quadrant all the trigonometric ratios are positive, and 2 pi minus theta goes in fourth. In fourth में भी cos क्या होता है? Positive. Therefore cos 2 pi either 2 pi plus theta or 2 pi minus theta both gives the plus cos theta. तो ये मिला cos pi by 4 और आंसर क्या हो गया? 1/√2. So therefore this is the general solution. So students, in this way you can solve the question related to cos theta is equal to cos x या cos x is equal to cos theta. This type of question. I will explain next theorem. Theorem number 3rd. Next theorem number 3rd. I hope you understood. Two very much simple topic, trigonometric question. इस trigonometric function में trigonometric question very much simple है. Easily you can solve the questions related to it only by hurting its formula, related formula. So next I will explain for the tan. अब देखो कोसेक का क्वेश्चन होगा तो हम साइन में चेंज करके सॉल्व करेंगे. सेक का क्वेश्चन होगा तो हम कॉस में चेंज करके सॉल्व करेंगे. और थर्ड हम देखेंगे tan के लिए. थ्योरम रिलेटेड थर्ड. दिस इज फॉर tan. मींस tan x इज इक्वल टू इफ tan थीटा इज गिवन. इफ हमको फाइंड आउट हो tan x इज इक्वल टू tan थीटा. सो लाइक लास्ट टू theorem, in this theorem also transpose tan theta left side, it becomes tan x minus tan theta is equal to 0. Then you can change in the form of sin cos, then easily you can solve. tan में भी solve हो सकता है, but sin और cos में अगर हम change करके solve करें तो और भी simply समझ में आएगा. sin x by cos x minus sin theta upon cos theta is equal to 0. तो इट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिला? sin x into cos means LCM लो minus sin theta into cos x upon cos x into cos theta is equal to 0. As you know denominator 0 नहीं होता. Once again it fall in here. So just we'll continue. Due to some problem today it fallen 2 times. So sin x into cos theta minus sin theta into cos x upon cos x into cos theta. इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अदर साइड तो ये 0 होगा. मीन्स क्या हो सकता है? इट इज पॉसिबल sin x into cos theta minus sin theta into cos x must be equal to 0 होना चाहिए. Denominator should not 0, therefore numerator must be 0 to get it 0. And what is this? sin a cos b minus cos a sin b. ये किसका फॉर्मूला होता है? You remember sin a minus b means sin x minus theta is equal to 0. So I got sin x minus theta. Sin x minus theta is equal to I got 0. And if sin x minus theta is equal to 0, so what possibility to become x minus theta? X minus theta must be the multiple of pi. Pi का multiple होना चाहिए ना? Any multiple of pi. There, then what is x? Then what may be x? X is equal to n pi plus theta. So therefore ये देखो solution क्या find out हुआ? Where n belongs to z. ये देखो possible solution है for if tan x is equal to tan theta. ये learn रखना है. If tan x is equal to tan theta, then x is equal to n pi plus theta only. Plus theta where n belongs to z. I will explain one example for this question also. So one example here for this question
Example, suppose this one is given tan x minus root 3 is equal to 0. Tan x minus root 3 is equal to 0. So tan x is equal to square root of 3. You know this, it's what may be the principal value. प्रिंसिपल वैल्यू, किस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए tan थीटा रूट 3 होगा? इट इज द पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री के लिए होता है, तो tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3. tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3. एंड इफ tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x क्या होना चाहिए? व्हाट मे बी इट्स जनरल सॉल्यूशन? n पाई. फॉर्मूला यूज करो n पाई प्लस थीटा. व्हाट इज थीटा? पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू z, एनी इंटीजर, n कोई इंटीजर होगा. So x is equal to n pi plus pi by 3, where n belongs to z. This is the general solution of this equation. So there are these three rules I have explained. Means if the question related to cosec, you need to solve with the help of sin. Sin में change करके solve करो. sec का हो cos में change करो. cot का हो tan में change करो. तो ये three rules हैं, three properties है जिसको तुम्हें learn रखना है. Okay. And some more thing I will explain here. If suppose karo anywhere you are getting sin x is equal to 0, already you got here. अगर हम sin x is equal to 0 टाइप का कहीं क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाए, sin x is equal to 0, तो ये क्या हो सकता है आंसर? इसको लर्न कर सकते हो. ये पाई का मल्टीपल होगा ना, n पाई होगा, n x is equal to n पाई. ये इसका जनरल सोल्यूशन है. बट एक प्रिंसिपल सोल्यूशन में 0 आ सकता है, पाई हो सकता है ना, 2 पाई हो सकता है. बट अगर हम ये प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन देखें, x इक्वल टू क्या हुआ? n पाई. इफ cos x इक्वल टू 0, if cos x इक्वल टू 0, so what may be x? Can you tell to me? Odd multiple of pi by 2. So 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to z. If tan x इक्वल टू 0, then what may be? वही x, because sin by cos, cos को 0 कर दिया. sin x इक्वल टू cos x को ट्रांसपोज कर दिया, बिकॉज cos तो 0 नहीं होगा, अदरवाइज tan डज नॉट एग्जिस्ट. तो क्या होगा? sin x मस्ट बी 0. अगर sin x 0 हुआ तो x क्या होना चाहिए? n पाई. x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसको तुम्हें रिमेंबर रखना है, एंड यू नीड टू ट्राई द सम क्वेश्चंस. आई विल एक्सप्लेन 1-2 क्वेश्चन हियर, एंड यू विल ट्राई द एक्सरसाइज related to this that is given here. Exercise is given 3.4, so you need to try this exercise, and if you are having doubt you can ask to me. Okay, suppose one equation is given to solve, so I will explain one more question, how can you solve using these theorems. One question is given, solve sin 2x minus sin 4x plus sin 6x. Solve, this is the question from example given. Solve sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equal to 0. ये सॉल्व करना है. This we need to solve. This is not directly in that form. ये directly उस फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको उस फॉर्म में चेंज करना होगा. To changing in that form, we need to apply some formula. अभी देखो 2x plus 6x का सम होता है 8 और 8 का हाफ होता है 4, इसलिए इस बोथ को अगर हम साथ में लेकर के सॉल्व कर ले तो मे भी थोड़ा इजी हो जाएगा. अगर डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे इसके साथ में, then also you will get the solution. sin 2x plus sin 6x minus sin 4x is equal to 0. Here apply the formula of sin c plus sin t. What is sin c plus sin t? Twice of sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Here is minus sin 4x is equal to 0. Twice of sin. अभी देखो 6x plus 2x 8x, 6x plus 2x 8x by 2, that is 4x into cos 2x minus 6x minus 4x. minus 4x का हाफ करो, minus 2x minus sin 4x is equal to 0. So अभी यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है? sin 4x can be taken common, and देखो यहाँ पे मिला 2 और cos minus theta is equal to plus cos theta, therefore it becomes plus cos 2x
minus 1 is equal to 0. So what are the possibility? Possibility is that either sine 4x 0 or what is next? 2 cos 2x minus 1 0. 2 cos 2x minus 1 is equal to 0. If sine 4x 0, then what may be 4x? अभी देखो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हमने फॉर 0 के लिए. It is multiple of pi और cos 2x is equal to 1 upon 2. Correct ना? Where n belongs to z. In first case here n belongs to z. ये हम लोग बाद में भी समझ सकते हैं. First case में यहाँ n क्या होना चाहिए? z में लाई करेगा. So what is x? X is equal to n pi plus 4, where n belongs to z, or cos 2x is equal to half. तो cos 2x, when cos 2x is equal to half, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, राइट ना? तो cos पाई बाई 3 के केस में होगा. तो अभी देखो फर्स्ट का सोल्यूशन ऑलरेडी फाइंड आउट हो गया. सेकंड cos 2x is equal to, you will get cos 2x is equal to cos pi by 3. According to the formula cos x is equal to cos theta. क्या फॉर्मूला था? You remember 2n pi plus minus, right ना? 2n pi plus minus. So therefore you will get for second के लिए 2x is equal to 2n pi plus minus pi by 3. अभी देखो ये 2 अगर हम ट्रांसपोज करें तो मिलेगा क्या? n pi 2 से डिवाइड होगा प्लस माइनस pi by 6, where n belongs to z. So therefore the possible answers. Therefore what are the possible answers? So general solution of this equation is becomes general solution. What may be the general solution? Its general solution, you can look. What is its general solution? X is equal to n pi by 4 or x is equal to n pi plus minus pi by 6 for n belongs to z. So this is the general solution for this given equation. So students, if any question given in this form, firstly you need to apply some formula, some trigonometric identities to simplify this question, and after that factorize करेंगे, solve करेंगे, फिर ये 0 इक्वल करके ये solve करोगे, you will get the general solution. So I hope you understood the topic. If any problem, any clarification you want, anything is not clear, you can ask, but try the question from the exercise. Which exercise? I hope it is exercise 3.4. So try the questions from the exercise 3.4, and also examples also very much important. You need to solve the examples also. Thank you.